In this question, we have to find the zero of the polynomial in each of the following cases. So, हमें polynomial given है px is equal to ax, right? Where a is not equal to 0, condition given है. So, हमारे पास given क्या है? Polynomial px is equal to ax, right? हमें इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है. तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? गिवन पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल करेंगे, राइट? So let's equate px to 0. So to find zero of the given polynomial, zero of the given polynomial, what we have to do? Equate given polynomial px is equal to 0, right? Px, at the place of px we can write ax, right? Because px की वैल्यू हमें क्या गिवन है? ax गिवन है, राइट? सो इन द प्लेस ऑफ px हम ax राइट कर सकते हैं एंड इट इज इक्वल टू 0, करेक्ट? यहाँ से हम क्या करते हैं? वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? 0 हमारा राइट हैंड साइड में, इसको हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. So 0 upon 1, 0 upon a is nothing but 0. So हमें यहाँ से वेरिएबल x की वैल्यू मिल गई है 0. So hence we can say that hence x is equal to 0 is a 0 of the given polynomial. 0 of the given polynomial. Right? So this is the solution of this question.